Good morning, dear children. Today we will read next two stanza of the poem Rain on the Roof. See the lines. Now, every tinkle on the si- singles हैज एन इको इन द हार्ट। अब इन लाइनों में जो कवि है, इन पंक्तियों में कवि अपनी संवेदनाएं को व्यक्त करता है जब वो वर्षा की बूंदों की आवाज़ों को सुनता है। तो कहता है एवरी टिंकल, प्रत्येक बूंद की आवाज़ हैज़ एन एको इन हिज हार्ट, उसके हृदय में उसकी प्रतिध्वनि जो है अपना एक स्थान बनाती है, प्रतिध्वनि के रूप में आती है। एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, और हजारों यानी बहुत तरह तरह के उसके फैंसीज का मतलब कल्पनाएं ड्रीम के रूप में, स्वप्न के रूप में दिखाई देती हैं। इनटू विजी बीइंग स्टर्ट एंड द थाउजेंड्स रिकोलेक्शंस, रिकोलेक्शंस का मतलब स्मृतियाँ उसके दिमागों में आने लगती हैं, अपने ताने बाने बुनने लगती हैं। एयर थ्रेड इनटू बुफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ। कवि कहता है जब वह कवि कह रहा है कि जब वह अपने घर की छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है तो उसके मन में कई प्रकार के स्वप्न आते हैं, पुरानी स्मृतियाँ उसके मन में स्वप्न के रूप में आती हैं। तब उसके लिए यह आनंददायक दृश्य बन जाता है, अर्थात जो उसके छत पे बूंदें पड़ती हैं। नाउ explanation. The poet is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the roof top of his house. He says that every tinkle on the shingles has an echo in his heart. Whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart and in his dreams. He has many different fanciful imaginations. He adds that this sounds of the rain falling on the roof top creates many new different dreams in his mind. He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. So he says that as he listens to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind, and the memories of the past come back in the form of dreams. Now, now the next stanza. See the lines. Now in memory comes many my mother as she used in years agone. एगोन का मतलब होता है पास्ट। अब कवि जो इसमें बताना चाहता है वो कहता है कि छत पर जब वर्षा की टपटपाहट को सुनता है तो कवि को अपनी माँ की याद आने लगती है। तो उसकी माँ उसके यादों में आती है बूंदों के साथ में, एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, और जब वो पास्ट में इन बातों को सुनता था वो सारी चीज़ें। टू रिगॉर्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और उसको वो बात याद आती है जब उसकी माँ डॉन का मतलब सुबह उषा काल तक जब उसको सपनों में खोए रहने के लिए सुलाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू हिज रेफ्रेन, रेफ्रेन का मतलब निरंतर जो वर्षा होती है, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन। कवि कहता है कि वर्षा की बूंदों की आवाज़ उसकी पुरानी यादों को वर्तमान से जोड़ देती है, इसलिए कवि अपने घर की छत पर लकड़ियों की बनी जो टाइल्स होती है बरसात की बूंदों को पड़ने से प्रभावित होता है। इस प्रकार से उसको वह कवि सुन रहा होता है और देखता है। नाउ explanation. Here, the poet introduces his mother. He said that he is dreaming of his mother as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past. It is the memory of his mother who is no longer alive. In the past, she used to love him a lot. She used to consider him a darling and she would let him sleep till daybreak
and have sweet dreams. The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the rain drops falling on the roof top of his room. The sound of the rain makes him correlated his past with his present. That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room. Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past and he is reminded of his mother. Now, we are going to tell you some difficult words first. Fancies, sweet imagination, कल्पनाएं, web, knit, बुनना, agon, agon का मतलब past, darling, loving, loving का मतलब प्रिय, list, that is listen, and the refrain, refrain का मतलब होता है the repeated sound of the rain, air, air का मतलब before, and dreamers का मतलब those who see dream, that is स्वप्न दृष्टा. That's all. Thank you, all of you.